फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती थी। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some. My lord, and last judgment on this point. But is also member of the bench, my lord. Though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. My lord. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, ELT 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड। एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था, एक मिनट जरा आ जाए, जरा दे दें 23। ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा? उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड, पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड। फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है। इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज माय लॉर्ड जजमेंट। ये 82 किस पेज, कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में फरवरी पार्ट भी दे दें इसका, इसमें दोनों जगह चल रहा है। इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू। मेजॉरिटी व्यू की बात कर, जी जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है माय लॉर्ड। जी पेज 82 माय लॉर्ड योर ऑनर, ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें। माय लॉर्ड। Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, my lord. Page 4. My lord. जी May I read, my lord? जी As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63, in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof, while it is for the Parliament to enact such legislation, it may be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be a robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate. The question stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा माय लॉर्ड। 63 वाली बात है, अगर 63 की बात हो रही है, जी नहीं, इस फाइनल में 62 आ गया माय लॉर्ड। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें माय लॉर्ड? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी। सॉरी, इसमें माय लॉर्ड ये इसी के आखिर में है माय लॉर्ड, सॉरी मैं गलती से कह गया था। ये इसी की जो है ना, इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं माय लॉर्ड, अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड माय लॉर्ड। थर्ड पार्ट में तो मैंडेटरी हुआ रहा है, डिसेंटिंग ओपिनियन है, इसी में है माय लॉर्ड, ये इसी में वेब में है, सभी में होगा ना। 146 पेज माय लॉर्ड, 117 पेज 146 मैं रीड माय लॉर्ड? 146 एरा 117 माय लॉर्ड, लास्ट पैरा ऑफ जी माय लॉर्ड। majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in re-election in the by-election, if he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind the question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल बलोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए
लेकिन ये 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर, एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(a) थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? तो आपका जो पहला मौक़िफ़ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट में। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा, 1C हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका रियल इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल्लाह ब्लोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 169 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड। 168 मालो, पैराग्राफ 10 मालो, 10 and 11 both 11। दोनों पहले 10 पढ़े। There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents. Whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices, creative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest, and mean. There being no declaration to the contrary by a court of law, the said provision of Constitution is clear only upon a declaration from a court of law. Someone can be considered as such. This court is in cases of so and so has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to further protect the fundamental right of the citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. ये मालूम अगले बुक में चला गया मालूम, अगली किताब में आएगा जी मालूम। मैं पढ़ देता हूँ. By a competent court of law, after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution.
Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent, the concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be righteous, non-profligate, honest, and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord. Because we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याया साहब ने पूछ भी लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर. सब आर्टिकल 2 जो है ना